ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। Why am I suffering is the title of today's class. Okay. Who would like to read? Paras Prabhu, can we start with you? Would you like to read the slide? हाँ जी माता जी। हमारे आएगी सबको ड्रैग करना पड़ेगा थोड़ा सा। हाँ, sorry. हाँ अभी ठीक है। हाँ जी। Every human being suffers in the material world. No one can claim that he is not suffering. This is not possible. In the material world, there are three kinds of suffering: adhyatmika, abhibhautika, and adhidevika. These are miseries arising from the material body and mind, from other living entities, and from the forces of nature. We may suffer mental anguish, or we may suffer from other living entities, from ants or mosquitoes or flies, or we may suffer due to some superior power. There may be no rain, or there may be flood. There may be excessive heat or excessive cold. So many types of sufferings are imposed by nature. Thus, there are three types of miseries within the material world, and everyone is suffering from one, two, or three of them. No one can say that he is completely free from suffering. What is the problem of our lives? That we do not know. The modern education never gives the enlightenment about the real problem of life. That is indicated in the Bhagavad Gita. Those who are educated and are advancing in knowledge should know what is the problem of life. This problem is stated in Gita. One should always see the inconveniences of the birth, death, old ages, and diseases. Unfortunately, no one pays attention to these problems. Okay. So, तो हम सब देखते हैं everybody around us is suffering something or the other. This is our personal experience also. We can't, when we go to someone, we can't say, we can ask that person and he can't say that, you know, I'm completely happy, I have no problem. So ये possible ही नहीं है, if you see. So यहाँ पे three types of problems that are continuously bothering us. They've been identified by the Shastra. They are Adi Bhautika. Adi Bhautik is coming from the word Bhuta. Bhuta means people, you know, and other living entities. So if a mosquito bites us, we get dengue or malaria. Or if someone is troubling us, some person is troubling us or saying, you know, some harsh words to us. So that is an Adi Bhautika problem. Then Adi Atmika problems are those which are emanating from our body and mind. You know, we get into stress, we get into depression, and so many things like this. We are anxious about our future. So these are Adi Atmika problems. And then there are Adi Devika problems, as the word suggests, Devika, Devi, which means superior powers, you know. There are sometimes, you know, there are tsunamis, there are hurricanes, there are floods, earthquakes, which nobody has control over. So Atmika is coming from Atma, or the mind, you know, or the self, basically. So Adi Atmika, these words we can memorize, these are Sanskrit words. So Adi Atmika problems, Adi Bhautika problems, and Adi Devika problems. These three kinds of problems are continuously pinpricking us, you know, one or the other. Continuously they're disturbing us. No one can say that I'm completely free from these problems. So, so we must identify that these problems exist, rather than, you know, just accepting them. कि ये तो है ही, कोई बात नहीं, ऐसे ही जीना है. So, so like here Prabhupada is saying, everybody is suffering from one, two, or three of them. No one can say he's completely free from suffering. So everybody can, you know, they can judge from their own experience that some or the other problem is always troubling us. Also, Bhagavad Gita points out to 4 more problems, which is birth, old age, disease, and death.
So these 7 kinds of miseries are imposed upon us when we come to the material world. Every living entity, है ना, चाहे वो could be in a dog's body or a fly's body or in a mosquito's body. Everybody goes through these 4 phases in life, and some of the 3 problems, one of the 3 problems, or 2 or 3. Do you all agree with that? Is that Yes. correct? सभी के साथ हैं कि नहीं ये problems? जी माता जी। Yes, Mataji. तो हम अपनी, जैसे हमने presentations में भी cover किया था कि we just focus our lives on the focus of our lives is to just manage somehow the relative problems. कि आज सर्दी है तो हाँ कपड़े पहन लो, आज किसी ने मुझे ऐसे बोल दिया तो मैं उसको उल्टा बोल दूंगा, ऐसे ही छोटे छोटे all these relative problems we keep focusing on, and our lives go go waste rather, because we see that every day our body is getting older, every day we are advancing towards death. So aimlessly जीते हुए हम eventually death को पहुंच जाते हैं, और जो real problems हैं, जो 7 तरीके की real problems जो हमें scriptures बता रहे हैं, उनके ऊपर हम ध्यान ही नहीं देते. Okay, next कौन read करना चाहता है? निश्चय प्रभु आप पढ़ेंगे? Sure, Mataji. When a man is diseased, he thinks, all right, let me go to the doctor. He will give me some medicines and I will be cured. But he does not consider the problem very seriously. I did not want this disease. Why is there disease? Is it not possible to become free from disease? He never thinks that way. This is because his intelligence is very low grade, just like that of an animal. An animal suffers, but it has no sense. If an animal is brought to a slaughterhouse and sees that the animal before him is being slaughtered, he will still stand there contentedly eating the grass. This is animal life. He does not know that next time it will be his turn and he will be slaughtered. I have seen it in a Kali temple. I have seen that a goat was standing there ready to be sacrificed, and another goat was very happily eating the grass. Similarly, Maharaja Yudhishthira was asked by Yamraja, what is the most wonderful thing in the world? Can you explain? So Maharaja Yudhishthira answered, yes, the most wonderful thing is that at every moment one can see that his friends, his father, and his relatives have died, but he is thinking, I shall live forever. He never thinks that he will die, just as an animal never thinks that at the next moment he will be slaughtered. He is satisfied with the grass, that's all. He is satisfied with the sense of gratification. He does not know that he is also going to die. Done, Mataji. I'm sorry, there's some disturbance. Okay. So Prabhupada here is explaining that when we are like I was also talking about the relative problems, that we think, okay, I'm sick, no problem, I'll take the medicine and I'll be fine. But we don't think that this series of diseases keep coming and bothering me. Okay, today is this disease, tomorrow something else, and then I'll get old age, then eventually I'll have death. So this kind of intelligence is like animal intelligence, जैसे animal को कोई बीमारी हुई, they can't even go to the doctor, but they just go with it कि ठीक है, और जैसे यहाँ पे Prabhupada is giving an example of a Kali temple where one goat was getting slaughtered and the other goat, although it was seeing कि ये slaughter हो रही है, but it couldn't register, it was just happily eating grass.
but she didn't know that it was her turn next. So so just like this, for us as well, if we see, if we see that we see all around us, all around us, people are dying. Isn't that correct? We see people are dying. And I know even young people are dying these days. But what are we thinking? I have to plan, I have to live for the future, I have to make so many plans, as if I'm going to live forever, isn't it? So this is like real madness. We never think we're going to die. We plan, although it may happen that we go to, we see some family member or a friend passing away, and then for 3-4 days we keep thinking about it. Oh, this can happen to me as well. But after that, the 5th day, what happens? We completely forget. We go on with our lives. We don't even care that any moment death could approach us. And generally, when we try to speak to people about this topic, then they shove it under the carpet. They say, why to talk about death? Why should we talk about death? This is you're very depressing. Don't talk about it. But isn't that a blatant reality of our lives? Why must we not speak about it? We must face it. So art of living is important, but art of dying is also very important. We know, we should know that, what happens at death. The body dies, but the soul goes on living. And then the soul has a destination. So we should talk about death. Like in the last module, we read that, when death happens, then it's not the end of everything. Like today I'm wearing a black shirt and I'm changing it to a blue shirt, then it doesn't mean I have died. Only the cloth is changed. Similarly, the body gets changed. At the time of death, the body is changing and it's taking on another body. It's not the end of everything. The me, which has been the feeling of me, continues to live, as we had from the childhood. We discussed that quite elaborately in the last class. So the me remains the same. It's just the dress that is changed. We get attached to the dress, we get attached to the byproducts of the dress, and that's what gives us pain, not the dress per se. So so we must talk about death. What happens if we do not talk about it, and if we go on with our lives like the way these animals are doing, then we are just animals. We don't deserve to be called humans. So there's a story of Maharaj Yudhishthir, and Yamaraj asked him that what do you find, what is the most wonderful thing in this world? So Maharaj Yudhishthir gave the answer that we see everybody dying around us, but we feel we're going to live forever. So this is the most amazing, most wonderful thing that's happening in the world. We don't know that we can die at any moment. So how should we prepare? There is, in ISKCON, we often talk about it, that, life is a preparation, death is the examination. So, so many deaths we have gone through. If you see, in various bodies, we've been into various bodies, 84 lakh species, and many, many times through these species. And we've died. We have faced death. And every time we face death, we prepared for another body, which means another set of birth, old age, disease, and death. Adi bhautik, adi atmik, adi devik problems. Whoever is coming to the material world is given 7 things free. Take one birth and get 7 things free. These 7 pangs, you'll get them free. So human life is to inquire about it. Why am I dying? And does anyone want to die? Does anyone want their friends to die, or their relatives or their family members to die? No, we don't. Why is it happening when I don't want it? Why is it beyond my control? Why is disease beyond my control? Why is old age beyond my control? Why is it so human life is given for only one purpose, athato brahma jigyasa. Jigyasa, to be inquisitive. So we have to question. No other species can question this. They can just go through birth, old age, disease, death.
another set of birth, old age, disease, death, and so on. But only in human life can we put this question, why is this happening? So, okay, we'll continue reading. Who'd like to read? Shalini, is it possible for you to read? Yes, Mataji, I can read. My father has died, my mother has died, he has died, she has died. So I will also have to die. Then what is after death? I do not know. This is the problem. People do not take this problem seriously, but the Bhagavad Gita indicates that this is the real education. Real education is to inquire why. Although we do not want to die, death comes. This is real inquiry. We do not want to become old men. Why does old age come upon us? We have many problems, but this is the sum and substance of all of them. The sage of India has developed a different kind of civilization which enabled them to know themselves. They had discovered that we are not at all material entities, but that we are all spiritual, permanent, and indestructible Indestructible. servants of the absolute. But because we have, against our better judgment, chosen to completely identify ourselves with this present material existence, our suffering has multiplied according to the inexorable law of birth and death, with this consequent diseases and anxieties. These suffering cannot be really mitigated by any provision of material happiness, because matter and spirit are completely different elements. It is just as if you took an aquatic animal out of water and put it on the land, supplying all the manner of happiness possible on land. The deadly suffering of the animal are not capable of being relieved at all until it is taken out of its foreign environment. Spirit and matter are completely contradictory things. All of us are spiritual entities. We cannot have perfect happiness, which is our birthright. However much we may meddle with the affairs of mundane things, perfect happiness can be ours only when we are restored to our natural state of spiritual existence. This is the distinctive message of our ancient Indian civilization. This is the message of the Gita. This is the message of Vedas and Puranas. This is the message of all the real acharyas, including our present Acharya Veda and the line of Lord Chaitanya. Thank you. So, here Srila Prabhupada is pointing out that Bhagavad Gita can give us the real education. है ना? तो अभी अगर एजुकेशन की बात करें तो हम एक स्कूल में जाते हैं और हमें सबको मटेरियल एजुकेशन दी जाती है सामान्य रूप से, ऑल द सेम, एवरीबडी इज अंडरगोइंग द सेम एजुकेशन. In the previous ages, there were gurukuls, and in gurukuls, what used to happen was that kids after they were 5 years of age, they were tested for their aptitude. आपने सुना है ना aptitude test? So ये test बहुत ही these जो भी आचार्य होते थे, गुरु होते थे, तो वो उन टेस्ट को इस तरीके से ऐसे क्वेश्चंस और ऐसे एक्टिविटीज करा के वो जज करते थे स्टूडेंट्स को कि वो जो बच्चा है वो क्या आगे जाके क्या बनेगा, है ना? जैसे कुछ बच्चों को बुक रीडिंग में इंटरेस्ट होता था. आपने सुना है, अभी भी होता है ये, कि जब बच्चा क्रॉल करना सीखता है तो एक सेरेमनी होती है जिसमें एक जगह पर पैसे रखते हैं, एक जगह पर बुक्स रखते हैं, एक जगह पर कुछ खाने के आइटम्स ऐसे रखते हैं. 2-3 ऑप्शंस रखते हैं बच्चे के लिए और बच्चे को थोड़ा दूर पे छोड़ देते हैं. और फिर जो बच्चा क्रॉल करके वो क्या चीज को पकड़ता है वो उसका एप्टीट्यूड माना जाता है कि उसको किससे सबसे ज्यादा आकर्षण हो रहा है. तो हमने देखा है हमारे इसमें इस्कॉन टेम्पल्स में जो बच्चे अभी जो हो रहे हैं, तो भागवतम रखी जाती है, कहीं कहीं गहने पैसे रखे जाते हैं और खाने का सामान रखा जाता है, तो बच्चे सीधा भागवतम को पकड़ते हैं, है ना? तो ये तो बहुत ही छोटे लेवल पे हो गया. बट जब 5 साल का बच्चा होता है, बोलने भी लगता है और एक्टिविटीज भी करने लगता है, तो आसान होता है. तो गुरु जो होते हैं गुरुकुल में, वो जज करते हैं कि ये बच्चा
किस चीज में फिट होगा, है ना? जैसे कुछ बच्चे हैं जो they like reading and writing, है ना? So they are put in one class which probably they would grow up into brahmanas. So ऐसा नहीं है कि ब्राह्मण का बेटा ही ब्राह्मण बनेगा, जो आजकल कलयुग में माना जाता है, नहीं, है ना? एनीबडी, क्षत्रिय का बेटा भी ब्राह्मण बन सकता है, वैश्य का बेटा भी ब्राह्मण बन सकता है, as long as he is keen to study, study and teach. So so people, the kids who love to read and write, they are put into the category of brahmanas, and they are given that education, and the kids who are interested in management or protection, the gurus judge that, and they are put into the kshatriya class. And the kids who are interested in who seem to be having the aptitude of doing business, they are put into the categories of vaishyas. That's how education used to happen. Currently, all the education is the same for everyone, so that is how the problem. I've had I have my sister's daughter. She's exceptionally great at drawing. She's an artist. She draws everything in like 2 minutes. She'll draw a nice picture or something with the pencil, but she cannot solve mathematical problems. Have you seen kids like that? She doesn't have the brain to study mathematics, but unfortunately till 10th mathematics is compulsory for everyone, and she barely passed, and her mother used to be really angry at her. But what could you do? She has one forte, but her brain is not wired to study maths or solve complicated mathematical problems. Maths is compulsory till 12th also. She did she took a lower level of maths till 12th after 10th. So so earlier it never used to happen like that. A child was identified. If he has that aptitude, he was put into that class. So and the education currently is meant only for sense gratification. You study hard so that you can get a nice job, and then you can earn money, and then you can have a good wife or a good husband, and you can have a nice house and you enjoy. That's all is the purpose. Nobody is teaching us that in spite of doing all this perfectly and impeccably, we are still going through old age, disease, and death. Everything is so futile. If you look at it, everything is going to end in death, isn't it? Even if you live your life perfectly, you're going to die. So how futile it is. So anybody who's intelligent would question this. Generally people are not interested in this because they don't have the intelligence. Bhagavatam says you have to be sumedha. Sumedha matlab achhi buddhi. Su matlab good. Medha, intelligence. So somebody who's blessed with good intelligence can only question this, that the futility of all these material efforts. So here it's being explained here that so the sages of India had developed a different kind of civilization which enabled them to know themselves. So this is so important. I mean, you can go through all sorts of material education for keeping the body, for maintaining the body. You have to earn money. That's fine. But side by side, this education should also be given, that who we are actually, what is the purpose of our lives, what will happen at death. So, here Prabhupada is saying that the sufferings cannot be really mitigated by any provision of material happiness, because matter and spirit are completely different elements. So, very nice analogy Prabhupada gives us. If you have a fish, and you take the fish out of water, and you put it in a room which has a nice plasma screen TV, and you give very nice nutritious drinks to it to drink, and it's very comfortable. The sofa is there and all sorts of comforts, best of foods are there. Do you think the fish will be happy? Garima, are you there with us? Do you think the fish will be happy? No, Mataji. What does the fish want? Fish wants to live in the pond. Yes, that's She doesn't want those comforts of life that human needs.
no, that human needs, no. You're getting me wrong. This is an analogy. एक मछली को पानी से अगर हम निकाल देंगे और उसे सब कुछ दे देंगे तो क्या वो खुश रहेगी? नहीं रहेगी, है ना? नहीं रहेगी। क्या हम लोग इन सब चीजों से खुश हैं? अगर ये हाँ। सारा सामान भी हमारे पास है, to the best, we see the richest of people, you know, No, we are also not happy. No one is happy. no one is happy, है ना? Because we are like that fish out of water. जैसे fish को पानी चाहिए, है ना? तो दो elements हैं, spirit and matter. Okay, so can you mix water and oil? Can you mix water and oil? Even if you run it through a fast mixer, you can't mix No. it, right? The globules of oil will remain separate. Similarly, I am spirit and I'm trying to enjoy myself materially. You know, I'm trying to, for instance, my car, my new car or my new mobile phone or my new house, I'm trying to enjoy myself through that. So I am spirit, I am trying to enjoy myself through matter. It's not possible. Like water and oil will not mix. I cannot enjoy materially because I'm a spirit soul. And when you, for instance, I was also struggling hard to get material happiness. And when I came to the ISKCON temple, I felt there was some kind of happiness which I hadn't seen before. But, you know, there was something that was coming from inside. It was not related to matter. You know, it was not related to my accomplishments or my acquisitions. You know, it was coming from some spiritual level. So that's the happiness that I still retain after 17 years. That still goes on increasing. So a spirit soul can enjoy only spiritual happiness. You know, we are all looking for that standard of happiness. We are not, material happiness, little bit of happiness is there, but are we satisfied with it? No, we're not. No, Mataji. No, we're not satisfied with material happiness because our desire, innate desire, is to enjoy something which is perfect, which is permanent, which will go on increasing. But it's not happening, it's not coming to us. और इसी चीज को खोजते 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 हमारी अभी we meet our death also. You know, every life is just an endeavor to achieve that permanent happiness. And Maya is so strong, she just tells us happiness is just around the corner. It'll be soon coming, don't worry. And you just have to work a little harder. है ना? ऐसे बोलती है माया. पर हम सब अपने हृदय में झांक के पूछे, क्या हम चाहे कुछ भी अचीव कर लिए जो हमने सोचा था बचपन में, क्या हम वो हैप्पीनेस प्राप्त कर पाए जो हम सोचते थे कि हमें मिलेगी? परमानेंट हैप्पीनेस, परमानेंट शांति, है ना? तो क्योंकि हम स्पिरिट सोल हैं, आप समझ रहे हैं ना, जैसे तेल और पानी को घोल नहीं सकते, तो एक स्पिरिट सोल का जो स्टैंडर्ड ऑफ हैप्पीनेस है वो स्पिरिचुअल है, मटेरियल नहीं है. मटेरियल जड़ चीज से मैं एंजॉयमेंट नहीं ले सकती, मुझे कोई स्पिरिचुअल व्यक्ति चाहिए. तभी देखो हार्वर्ड बिजनेस स्कूल की स्टडी थी, 80 इयर्स तक स्टडी थी, ओवर 3 generations. तो उनकी फाइंडिंग क्या थी कि what do people derive real happiness from relationships. चाहे कोई बहुत पैसे वाला है, उसके कोई रिलेशनशिप नहीं है, he'll not be happy. You know, भाई नहीं है, बहन नहीं है, माँ नहीं है, बाप नहीं, he can't be happy alone. You derive real happiness through relationships. And if you understand, relationships are there because they're souls. People are souls, right? That is how you derive that happiness from them. You can't derive happiness out of a dead body. चाहे उसको माँ बोला हो या पिता बोला हो कितने कितने सालों, right? So, so perfect happiness can be ours only when we are restored to our natural state of spiritual existence. So this is the message of the Vedas and Puranas and all the Acharyas. So we must try for spiritual happiness.
instead of just endeavoring for material happiness, which cannot be giving us complete happiness. Okay, any questions or doubts so far? कोई क्वेश्चन नहीं है किसी का? ठीक है, अब हम क्वेश्चंस पूछेंगे. Spiritual intelligence. 3 questions. Okay, pehle to discovery, what we discovered through this passage. Mention 3 kinds of sufferings. You can raise your hands, electronic hands. 3 kinds of sufferings that people suffer from. Yes, Paras. Adi Devika, Adi Bhautik, and Adi Atmik. Yeah. Which one that is suffering from superpower, suffering from self, and suffering from the other living bodies around us. Yeah, can you just give one small example? Okay, so like suffering from other living bodies like the ants, mosquitoes, which are doing suffering from suffering from self is like the natural diseases which we go through, and superpower is the natural calamities or which we go through. Okay, all right. Yes, Richa, you want to add to this? Richa, have you raised your hand? Yeah, yes, sorry. I think this was basically this only, first is physical. This can we can, we get diseases, sometimes mosquito bites us, we get illnesses. Second is mental anxiety and depression and anything. And third is which are larger than, us also, like tsunamis, earthquakes, which cause that kind of suffering. Yes. So the 3 Sanskrit names which are given, can anyone say that? Or sorry. Let Richa finish first. Yeah. Adi Atmik, Adi. Please, 2 minutes. Sorry, I'm so sorry. Yeah. So there's Adi Bhautik, Adi Atmik, and Adi Devik. Yes. Okay. Anyone? Thank you, Richa. Anyone wants to add? Okay. I'll just a brief. So first is Adi Bhautik. Adi Bhautik are those things which others give to us. For example, a mosquito has bitten and the person has dengue, so given by somebody else. Adi Devik is what the Devtas give to us, what's natural. For example, floods came, tsunami, hurricanes, etc. These are Adi Devik. Then we have Adi Atmik. Adi Atmik is what we give to ourselves. Overstress, anxiety, depression, the problems we get from ourselves. These are the 3 major ones. Yes. Okay, very nicely put, Kirti. Yeah, thank you. So this is clear? So we pronounce it as Adi Bhautik, Adi Devik, Adi Atmik, है ना? तो ये terms आसान भी हैं. हमारी जो भाषा है, हिंदी भाषा में आत्म से आत्म मतलब सेल्फ, है ना? भौतिक आया भूत से, भूत मतलब पीपल, है ना? और आदि दैविक देवता, है ना? तो ऐसे याद कर सकते हैं इनको. What is the real problem of our lives? Okay. That we all are going to die, but we don't accept that. Okay. Mataji, could you please repeat the question? What are the real problems of life? So Shalini mentioned one problem, death. Yes, Ruchika. Mataji. Yeah. Sorry, Ruchika ka haath khada tha. Let Ruchika speak. After that, Garima speaks. Okay. It's birth, disease, age, and death. Yes. Yes. Okay, Garima. I was going to say same, Mataji, birth, disease, age, and death. And but the thing is, we are not questioning the real problems of our life, and we are focusing on materialistic things. But what we need to do is we need to focus on these real problems. We need to understand that why are people dying? Like
at last everyone is going to die. So we need to understand that we don't need to focus on materialistic things. Rather than that, we need to focus on spirituality. We need to focus on ourselves, our soul, not the body that we are seeing from outside. Yes. Anybody wants to add anything? Same, Mataji, they have covered the things like death, birth, age. तो हम लोग मरना तो चाहते ही नहीं, हमें लगता है कि हम मतलब ऐसी शक्ति है हमारे पास कि हमें कुछ होगा ही नहीं. एंड लाइक सो हम लोग इतने कॉन्फिडेंस रहते हैं एज अ ह्यूमन कि हम कल का प्लान करते हैं, सब कुछ वीक्स का प्लान करते हैं, मंथ्स का प्लान करते हैं, बट हमें पता ही नहीं कि हम तब तक रहेंगे भी नहीं रहेंगे. और उसके ऊपर से जो माया का असर है वो हम पे इतना जबरदस्त है कि हम कुछ कर ही नहीं सकते हैं. So I'll just Bhagavad Gita 13.9. I'll just open Bhagavad Gita 13.9. So, not able to show it somehow. So, Janam Mrityu Jara Vyadhi Dukkha Doshanu Darshanam. This is what Bhagavad Gita tells us, that Dukh Dosh Anudarshanam. इसका क्या अर्थ है कि ये जो चार चीजें हैं, बर्थ, ओल्ड एज, डिजीज और डेथ, है ना, इसमें हमें दुख तो इसका लगता है, पर इसमें हम दोष ही नहीं देख पाते. हम कहते हैं तो नेचुरल है, ये तो होना ही है. लेकिन we must see the problem with this. We can get over it. We don't need to accept this problem. We don't need to accept this dukh. है ना. तो भगवत गीता हमें क्या सिखा रही है कि इनमें दुख देखो, इन दुखों में दोष देखो, है ना. दोष देखेंगे तभी तो हम we can try to resolve it, है ना. A person who's following spiritual life, he is devoid of he becomes devoid of birth, old age, disease and death, you know, because he gets liberated, you know, as a spirit soul. He identifies that he is a part and parcel of Krishna. So we can get rid of birth, old age, disease, death, है ना. तो इसमें दुख और इन दुखों में दोष देखो, भगवत गीता is saying like that. तो ये चार जो है ना, सो शालिनी आपने एक बताई, और ये चारों जो हैं हमारी जो प्रॉब्लम्स हैं बेसिकली, है ना. These four are the problems. Okay. I'll share. So next question हमारा है अंडरस्टैंडिंग का, कि हमने क्या समझा. Why is it that though we see many people suffering and we ourselves are suffering, we're not looking out for a solution to end these sufferings? Mataji, because Maya is not letting us do that. We are much into materialistic things that, you know, जैसे आपने बताया था कि हम लोग ट्राई करते रहते हैं कि हम थोड़ा और करेंगे तो हमें हैप्पीनेस मिल जाएगी. सो हम उस चीज में इतने ज्यादा, मतलब अभी मैं भी बोल रही हूँ, बट स्टिल हम वीकेंड्स का भी प्लान करते हैं. जैसे अभी दिया भैया ने बोला, हम सारी प्लानिंग करते हैं कि ये फंक्शन आने वाला है, ये फेस्टिवल आ रहा है, ये करना है, जबकि हमें पता भी नहीं है कि नेक्स्ट मोमेंट क्या होने वाला है. So Maya is like, you know, the power जो हमें रोक रही है. Okay. All right. Okay. Anyone else would like to share their understanding? Nishchay Prabhu? Same, like we are waiting around the problems, but not understanding the, we are indulged in wrong kind of issues. We are not trying to understand the real issues, and that is keeping us apart from the real connection, real happiness. Yes. Yes. Okay. Dheeraj Prabhu. Yes, Ruchika, please boli.
माता जी मुझे लगता है कि हमें नॉलेज भी नहीं है, जैसे आपने कहा, हमें लगता है कि ये तो हमें सब करना ही पड़ेगा, ये तो हम अगर इस दुनिया में आए हैं तो हमें ये सब चीजें तो करनी ही पड़ेगी और हमें इसके साथ चलना पड़ेगा। हमें किसी को नॉलेज ही नहीं है कि हम इन सबको अवॉइड कर सकते हैं या इनको कैसे इनसे बाहर आ सकते हैं। तो ये भी एक रीजन हो सकता है। यही रीजन है। माया क्या है? माया तो एग्जिस्ट ही नहीं करती। माया मीन्स डज नॉट एग्जिस्ट, विच मीन्स व्हाट? दैट वी आर इग्नोरेंट, हमें ज्ञान नहीं है ना? तो कारण जो, सॉरी, यस पारस बोलिए। We are not taught in schools from the starting about all these things. हाँ, बेसिकली माता जी स्पिरिचुअल गाइडेंस सिखाई नहीं जाती ना कभी स्कूल में। जैसे अर्लियर डेज इट वाज गुरुकुल एंड ऑल, वहां पे फिर भी कुछ बताया जाता था। आजकल के स्कूल्स में तो बच्चों को कुछ चीजें सिखाई ही नहीं जाती, और जब सिखाया ही नहीं जाएगा तो पता कैसे चलेगा? और जो सिखाया जाता है वो इट्स ऑल माया माया माया। ठीक है, सो दिस इज अ प्रॉब्लम हर किसी की लाइफ में। फिर टेक अ चाइल्ड, राइट, तो उसकी लाइफ में प्रॉब्लम क्या? स्कूल का होमवर्क, स्कूल जाना है, करना है। बड़ों की लाइफ में अलग प्रॉब्लम्स है, बच्चे, ठीक है, वाइफ उनकी, सब कुछ, मतलब एवरीबडी हैज अ प्रॉब्लम। और हर कोई ये बोलता रहता है प्रॉब्लम है प्रॉब्लम है प्रॉब्लम है, ठीक है, बट वो उसके सॉल्यूशन के लिए जाता नहीं है। और जब जाता है तो वो थोड़े टाइम के लिए ही जाता है। जैसे कि किसी को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होगी तो वो भगवान का नाम लेगा, बट बहुत कम ऐसे लोग हैं जो सुख में भी भगवान का नाम लेते हैं। सो दिस इज अ रियल प्रॉब्लम। अगर आप डेली चैंट करो या डेली आप मंदिर जाओ, वट एवर यू वॉन्ट टू डू, मतलब आप पाठ करो, चैंट करो, सो यू विल बी इन अ गुड स्टेट। आप मतलब उतना ही अच्छे उसमें रहोगे। yes, yes, anybody else? सो दैट इज द रियल रीजन, है ना? हमें स्कूल में नहीं दी गई, ये बात भी सही है। शुरू से देते तो बहुत अच्छा होता, लेकिन अभी भी हम बहुत सारे लोगों के पास जाते हैं। हमारे ग्रुप में ही देखिए कितने सारे लोग थे, बट हम चाहते हैं, ऐसा नहीं है कि कृष्णा ने ये सारा अरेंजमेंट करके रखा है, वो प्रभुपाद जैसे डिवोटीज को भेजते हैं जिससे कि ये ज्ञान पहुंचे सोसाइटी तक, बट हम लेना भी नहीं चाहते इसको। ऐसा लगता है ना आपको? लेना भी नहीं चाहते ना? कितने सारे लोग होते हैं, हम we keep trying to give them this knowledge but they don't want to take this knowledge, so you know. मदर एक चीज और है इसमें ऐड ऑन करूंगा कि जैसे स्पिरिचुअल गाइडेंस भी है, लोग लेना तो चाहते हैं बट गलत लोगों से भी लेना चाहते हैं, मतलब दे आर नॉट ऑन द राइट पाथ। ठीक है, जैसे मतलब यू आर गिविंग द क्लासेस, सो यू आर एक मतलब ट्रू सॉल दैट इज गिविंग, बट कितने ऐसे लोग हैं मींस दे आर फ्रॉड, वो ये कर लो वो कर लो एंड ऑल। सो पीपल आर इन्वॉल्व इन दीज एक्टिविटीज मच, मतलब जहाँ अगेन वो कम्स टू अ माया वाला फैक्टर अगेन आई विल से। So they are not to the right guidance or right spiritual path, I'll say. So Prabhupada gave us one, he told us one thing. He said that cheaters exist because we want to be cheated, है ना? क्यों एग्जिस्ट करते हैं? जैसे सस्ता धर्म बेच रहे हैं वो लोग कहते हैं ये मंत्र ले लो, चाहे तुम शराब पियो, चाहे तुम कोई नशा करो, चाहे पर स्त्री संबंध करो, illicit sex, gambling, meat eating, go ahead and do what you want to do, just take this mantra, give me 1,000 rupees and you're going to be happy, you know, like that. This is ये वाला धर्म सबको चलता है ना? लेकिन जब सही धर्म की बात आएगी, कोई भी व्यक्ति जो सही धर्म सिखाएगा वो पहले बोलेगा कि अपनी पाप की एक्टिविटीज बंद करो, है ना? पर स्त्री संबंध मत करो, डोंट डू इलिसिट सेक्स, डोंट डू गैम्बलिंग, डोंट डू मीट ईटिंग, है ना? जो भी सही पथ पे लेके जाएगा, बट लोग ये करना नहीं चाहते। लोग चाहते हैं कि वो अपनी सारी एक्टिविटीज, देखो एक प्योर पाथ को अप्रोच करने के लिए खुद भी तो प्योर होना पड़ेगा ना, पर लोग प्योरिटी नहीं चाहते। लोग चाहते हैं बस किसी प्रकार से सस्ता सा कुछ धर्म मिल जाए, है ना? ये गुरु जी को हमने 100 रुपए दे दिए हैं, अभी हमें मंत्र दे देंगे और सब हमारी लाइफ में ठीक हो जाएगा, है ना? सो चीटर्स आर एग्जिस्टिंग बिकॉज पीपल वांट टू बी चीटेड, है ना? तो जहां पर चीटर्स हैं वहां पर सही धर्म सिखाने वाले लोग भी हैं, लेकिन हम जा नहीं रहे उनके पास, है ना? क्योंकि दे डिमांड समथिंग, इट डिमांड सम ऑस्टेरिटी, कि जो बुरी एक्टिविटी है उसको छोड़ दो, तभी तो शुद्ध बन पाओगे। तो हमें ज्ञान नहीं है, ये सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि we are not looking for solution, है ना, to end these sufferings because we are just covered with ignorance,
है ना, एंड वी डोंट वांट टू टेक दैट नॉलेज. अगर कोई हमारे पास, जैसे अभी भगवत गीता डिस्ट्रीब्यूट हो रही है, ज्यादातर लोग मना कर देते हैं, नहीं चाहिए हमें भगवत गीता, नहीं पढ़नी हमको भगवत गीता. So, so somehow हम सबका, in fact, all of us who are benefiting from this path, we should also tell others about it, है ना. कोई एक friend जिसको बताना चाहिए कि, क्योंकि सब लोग बहुत suffer कर रहे हैं, we should try to give this to someone who can also benefit. See, everyone is suffering now, so we have to be compassionate. Okay, how is the analogy of aquatic animal out of water applicable to us? तो पानी में से निकाली गई fish, उसकी analogy हमारे ऊपर कैसे, हमने इसको डिस्कस किया. You just have to repeat it. और भी सब लोग आंसर कर सकते हैं. Okay, निश्चय प्रभु. We are जैसे हमें भगवान से अलग होके, या फिर जो हमारे how would I say, जैसे मछली को पानी में से निकाल के वो कभी खुश नहीं रह सकती, वैसे ही हम स्पिरिचुअल नॉलेज और स्पिरिचुअल साथ के बिना हम खुश नहीं रह सकते इन दिस मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड. मतलब हमें वही चाहिए. जस्ट लाइक देयर इज नो अल्टरनेटिव फॉर वाटर फॉर फिश, देयर इज नो अल्टरनेटिव फॉर स्पिरिचुअल connection to us. Yes, very nice. Okay, Richa, you want to add? No, it was just only that, you can give the fish जितनी भी comfort, उसको अगर पानी से बाहर निकाल के कोई भी comfort, सब कुछ अगर keep it as a king also, तब भी it cannot be happy, it cannot survive. Similarly, हम भी चाहे हमें जितने भी comfort मिले, सब कुछ मिले, but हमें till the time we are not connected in the spiritual way, we cannot be happy. Yes. Very nice. Thank you. Kirti, you want to add? Yes, Mataji, I just take a different elaboration on it. हम कौन है? हम आत्मा हैं. हम कहाँ से आए हैं? परमात्मा से. What is the mood of Paramatma? It's Satchidanand, which is always in the mood of आत्मा के अंश है. हमारे अंदर उनका ही एक, that mode of Anand is always there. But because we have come here, हम यहाँ पे we are finding Anand, we are finding Sukh and satisfaction, which is not possible. So even if I buy a Ferrari or a penthouse, I still am suffering. There's this suffering and we're not happy, like the state of the fish, जिसको अगर हमने पानी से भी निकाल के 7-star hotel के room में भी रख दिया, but still will not be happy. So similarly, we're looking for false happiness here. Actually, what the happiness which we are looking for is only there at Satchidanand. Yes. Okay, very nice. Okay, anybody wants to add to this? Hare Krishna, Nikita. Hare Krishna, Mataji. I want to add that this analogy is what is my real nature. And my real nature is happiness, and I can't that pure happiness, and we can't find the pure happiness in this impure world. So like fish's nature is she wants to live in water, and she'll be happy in the water. Same, we are, as the other Mataji said, we are the part and parcel of the God, and the nature is Satchidanand. So Satchidananda we cannot find in the world. We can find in the, Very beautifully said. Hare Krishna, Mataji. Very nice. Very nice. I'm very happy to hear that from you. कितने सुंदर तरीके से आपने explain किया. So, as Kirti also elaborated and Nikita ji also elaborated कि हमारा nature क्या है? सच्चित और आनंद. और इसमें सबसे predominant क्या है? आनंद. और सत और चित को भी जाने. सत क्या है? Eternity. चित क्या है? Knowledge. है ना? तो हम सच्चित आनंद के वाटर में भीगे हुए थे स्पिरिचुअल वर्ल्ड में, है ना? और अभी हमें कहाँ डाल दिया है? असत मतलब नॉन परमानेंट, अचित मतलब किसी चीज का ज्ञान ही नहीं है ना? अचित. और आनंद,
आनंद की खोज है केवल, निरानंद, है ना। तो एक जो वासी हो स्पिरिचुअल वर्ल्ड का, यानी सच्चित और आनंद से उसके वो ही इज इन द स्पिरिचुअल वर्ल्ड, we live in सच्चित आनंद. Sat means eternity. That means the body never deteriorates. The body is always fresh and young. वहां पे एक फूल भी होता है ना, वो कभी मुरझाता नहीं है ना। और चित मतलब फुल ऑफ नॉलेज, हर चीज का ज्ञान। हम अभी तो ऐसे स्टेट में है कि हमें ये भी ज्ञान नहीं है कि हमारे पेट में जो खाना गया वो कैसे पच रहा है, या कुछ बीमारी है पेट में तो पता नहीं है, हमारी बॉडी का ही ज्ञान नहीं है हमको, है ना। तो एकदम उल्टा है, असत अचित और निरानंद की स्थिति में हम यहाँ पर रहते हैं। तो उसी प्रकार से है, एक फिश को बोला जा रहा है आप पानी में मत रहो, आप हवा में रहो। तो नेचर ही नहीं है ना उसका। तो इसीलिए हम चाहे कितने भी खुशी के साधन, मटेरियल साधन जुटा लें, हम खुश नहीं रह सकते यहाँ पे। कुछ ना कुछ, ये जो हमने 7 तरीके की प्रॉब्लम डिस्कस की है, कुछ ना कुछ हमको पिंच करता ही रहेगा, कुछ ना कुछ हमको ट्रबल करता ही रहेगा, है ना। तो ये एनालॉजी क्लियर है सभी को? आप सबने बहुत अच्छे आंसर दिए। Okay, so we'll go to the next question. Application. Do you have any experience or realization that when you engage in devotional service, even for a moment, you forget about yourself and your surroundings? Do you wish this feeling would go eternally? Please share. Okay. तो जैसे आप कुछ भी भक्ति सेवा करते हैं, चैंटिंग, जैसे सब लोग चैंटिंग तो कर ही रहे हैं ना, तो क्या ऐसा होता है कि यू जस्ट फॉरगेट अबाउट द वर्ल्ड, दुनिया को भूल जाते हैं, और फिर ऐसे लगता है कि ये कंटिन्यू रहे, अच्छा लगता है कि ये ऐसा ही रहे तो अच्छा रहेगा। आप अपना, सब लोग अपना थोड़ा थोड़ा एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं। मे बी यू कैन जस्ट स्पीक फॉर अ फ्यू सेकंड्स। रुचिका। माता जी, मैंने कुछ दिन से एक्सपीरियंस करना शुरू किया, जैसे जो हम ये कीर्तन करते हैं ना राधा माधव, तो मैं रूटीन में रोज लगाती हूँ सुबह सुबह। तो कई बार ऐसा होता है कि कुछ सेकंड्स के लिए ना, मतलब मैं सच में, मतलब मैं रोने लग जाती हूँ, और वो फीलिंग इतनी डर होती है ना, मुझे ऐसा लगता है कि मैं हमेशा ऐसी ही फीलिंग में रहूं। मैं अभी अपने हस्बैंड से भी डिस्कस कर रही थी कि मैं चाहती हूँ कि जो ये फीलिंग मुझे हो रही है ना, ये सबको हो। मतलब वो एक इतना डिवाइन मोमेंट होता है कि कुछ भी याद नहीं है, नहीं तो सुबह सुबह, नहीं तो काम है, ऐसा लगता है कि कुछ भी नहीं है, बस इसी फीलिंग में रहो। और ये कीर्तन स्पेशली, मतलब मुझे बहुत अच्छा लगता है। वेरी नाइस, वंडरफुल। जय। ओके, निश्चय प्रभु, आप कुछ बोलना चाहते हैं? आपका अनम्यूट था इसलिए मैंने बोला। Though I'm not that much connected from last 2 or 3 weeks, but before when I was practicing it मुझे भी सेम ही लगा, और सब कुछ सेम था, काइंड ऑफ कि मुझे वो आई एक्सपीरियंस अ लॉट ऑफ थिंग्स एंड काफी अच्छा लग रहा था उस वक्त में, बट ड्यू टू ऑल द लाइफ चेंजेस एंड माया I got indulged in this life. So every day I'm procrastinating, like मैं आज से शुरू करूँगा, कल से शुरू करूँगा, but again थोड़ा सा difficult हो रहा है मेरे लिए दोबारा से करना। But जब कर रहा था, that time it was very well and very good. और again, at least I know a way to get better now. Yes. That's the great part. Yes, that's very nice. That's a very nice realization. तो yes, माया tests us. जब देखो, अगर कोई कैदी होता है, वो जेल से भागने की कोशिश करता है, तो क्या वो जेलर क्या करता है? उसके ऊपर निगरानी कड़ी कर देता है, उसको काल कोठरी में डाल देता है, निकल के दिखाओ तुम। तो माया का काम यही है कि हमें बहुत ठोक बजा के आगे भेजेगी। तो निश्चय प्रभु ने डिसाइड कर लिया कि वो भगवान के धाम जाएंगे, तो माया ने कहा लेट मी टेस्ट हिम, ये सीरियस है कि नहीं। तो माया ने निगरानी कड़ी कर दी, है ना। तो माया से हमें प्रभु जी जीतने के लिए भक्तों का संग हेल्प करेगा। तो जो भी आपको डिफिकल्टीज आ रही हैं, आप हमसे डिस्कस कर सकते हो,
है ना। जैसे ऑफिस में काम ज्यादा हो सकता है ना कई बार आपके, तो सुबह जल्दी उठ के ही जब कर लीजिए, है ना। जितना भी आपका 2 3 4 माला है, केवल अपनी नींद को 15-20 मिनट कम कर दीजिए, है ना। जो चीज अपने हाथ में उसी पे कंट्रोल कर सकते हैं ना। जैसे मैं भी जॉब पे जाती थी, तो मुझे भक्तों ने ही बोला, अच्छा ठीक है आप 7 बजे उठते ना, अभी कोशिश करके 6:45 6:30 बजे उठने की कोशिश करो। और कोई चैंटिंग करने के लिए वो स्नान करने की आवश्यकता नहीं है। Right. So you can just sit and chant, you get up and you just maybe wash your face and sit and chant. That's all. है ना? So we have to take out time from, we have to जो हमारे कंट्रोल में है चीजें, उन पे एक्सरसाइज करके हम कर सकते हैं। और ये हमें भक्तों से डिस्कस करेंगे तो पता लगेगा। इफ यू आर डिटर्मिन्ड, देन एवरीथिंग कैन फॉल इनटू प्लेस, है ना। जस्ट डिटर्मिनेशन इज रिक्वायर्ड। So you can discuss if you have any difficulty, है ना। Sure. और सभी को इसका आंसर देना है कि कभी अच्छा लगता है भक्ति करते हुए। पारस, कैसे लगता है मंदिर जाते हैं कभी या कुछ भी? Mataji, honest, I'll give the very honest answer. As I always mention, entry is very, very tough. It is very tough to push yourself to enter. Like if you chant 108 beats, so पहले 10 beat में तो you just try to start inhale it कि ठीक है, and when the flows come, then you of course, then the exit is then the exit is tough. You feel कि थोड़ा और कर लो. So and both, like even for going मंदिर में लगता है ये भी करना है वो भी करना है इतने काम है, but as and when we enter it, तो लगता है कि यही important है, बाकी तो चलो देख लेंगे, बाद में वो लेट भी हो जाएंगे, तो those are manageable. This is my personal and very honest experience that for every instance I have been, whether to mandir or to Sadi Japa, this always happens. Starting is tough, and the exit is tough. Wow. So beautiful. Thank you. Garima, what do you feel? सिमिलरली माताजी, जैसे सबने बोला कि जब स्टार्टिंग किया था ना तो बहुत डिफिकल्ट था कि मतलब रोज जपा करना है तो किसी किसी दिन स्किप भी हो जाता था। बट नाउ इट इज लाइक कि अब अगर रोज नहीं किया जपा तो फिर ऐसे मतलब ऐसा लगता है कि कुछ इनकम्प्लीट है। जैसे अभी मैं सुषिष्मिता माताजी को भी बोल रही थी स्टार्टिंग में कि आफ्टर पूरा दिन इतना हेक्टिक रहता है, तो रात को अगर पीसफुली सोना है तो उससे पहले इट इज माय हैबिट कि लाइक एटलीस्ट 2 राउंड्स तो मिनिमम करने ही करने हैं। एंड देन वो जो टाइम पीरियड होता है ना, उसके बाद आई फील सो हैप्पी एंड सो काम, एंड वो सब फालतू जो भी दिमाग में घूम रहा होता है वो सब बंद हो जाता है। सो मतलब इट रियली गिव्स इटर्नल हैप्पीनेस। Yeah, very nice. Thank you for sharing that. Okay, Dheeraj Prabhu. Same Mataji, I'll echo with both of them, right? कि एंट्री करना थोड़ा डिफिकल्ट है। हम लोग भी जैसे टेम्पल आते हैं या कोई सेवा करनी होती है तो इनिशियली लगता है कि वीकेंड है, कुछ और भी काम है, बट देन वी पुश आवरसेल्व्स और उसके बाद हम जाते हैं। तो फिर अंदर जाके इतना मतलब हम मगन हो जाते हैं कि हमें फिर बाहर की दुनिया दिखती ही नहीं है। फिर इट इज लाइक वही दिखता है। अगर हम वृंदावन जाए, चाहे इवन लास्ट वीक हम इस्कॉन गए थे जब वहां पे, तो भी सेम था। मतलब जाने में पुश करना वाज डिफिकल्ट इनिशियली क्योंकि और भी बहुत सारे काम थे, बट व्हेन वी वेंट तो बाहर आने का मन ही नहीं कर रहा था। ऐसा लग रहा था कि अभी टाइम ही क्या हुआ है। Very nice. if I'll say, like, if I chant, right, तो भी जैसे गरिमा ने भी बोला, so I also say many time मैंने बोला ये चीज कि when we chant, कितनी भी नेगेटिव एनर्जी हमारे सराउंड में बहुत है, बहुत नेगेटिव एनर्जी है, राइट, बट वो नेगेटिव एनर्जी चैंट करते करते हमारी पॉजिटिव एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। इट्स अ, चाहे वो हेक्टिक डे हो, चाहे वो कुछ भी बुरा चल रहा हो साथ में, बट व्हेन यू कीप चैंटिंग तो एक होप, एक पॉजिटिविटी आपके साथ रहती है जो आपको लीड करती है एक सक्सेस की तरफ। तो इट इज वेरी, मतलब मैं जब चैंट करता हूँ तो मैं चैंट करते करते खो जाता हूँ। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि आई एम इनटू वृंदावन एंड आई एम सिंगिंग ओवर देयर। Wow. Jai. ऑल्सो टू एड माताजी, लाइक इवन जब आपने क्लासेस स्टार्ट किए थे ना तो कीर्ति दी ने मुझे पहले पूछा था कि वुड यू लाइक टू जॉइन द क्लासेस। तो मैंने ना बहुत टाइम तक ऐसे उनको कुछ आंसर नहीं दिया, एंड ऑन जन्माष्टमी मैंने उनको ऐसी लाइक नॉर्मली मैसेज किया कि आई वुड लाइक टू लाइक जॉइन एंड सी कि कैसे होते हैं क्लासेस। एंड उसके बाद जब से मैंने ज्वाइन किया है, आई थिंक देयर इज नो गोइंग बैक नाउ।
तो भाई जब ज्वाइन करना था इट वाज रियली लाइक, मतलब मैं बहुत लेजी फील कर रही थी कि क्या यार रोज क्लासेस लेने होंगे, एवरी सैटरडे 1 घंटा देना है। बट नाउ इट फील्स लाइक अगर सैटरडे को क्लास ना लो तो ऐसा लगता है कि इनकम्प्लीट। जैसे उस दिन मैं नहीं ले पाई थी तो आई आस्क की थी कि प्लीज रिकॉर्डिंग भेज देना, बिकॉज वो ऐसा लगता है कि पूरा ऐसे टाइम सा वेस्ट हो गया है कि कुछ नॉलेज ही नहीं गेन करी है इस वीक। Very nice, beautiful. Mataji, I'll add one point here. Bhagavad Gita plays a vital role. I guess I'm emphasizing here that all the people who are there in this group must have a Bhagavad Gita. I'm using the word must because there were a couple of people I know who were not willing to join me or were not willing to understand this. I just, because I have heard it earlier, in your association ki Bhagavad Gita helps. So मैंने उन लोगों को भगवत गीता दिया और ये बोला पढ़ना मत, अगर नहीं पढ़ सकते इट्स ओके, बस रख लो अपने घर में, अपने पास रख लो. I did that with all of these people who were there with me. And it took them time, but eventually they are here. Wow. So that's the power of Bhagavad Gita. And kabhi na kabhi ek baar to hua hi hai that people have opened it, not read it, but at least seen through the pages. And that blessing, that power is so much that it brought them here. So I have experienced this with each one of the person whom I have brought here, that it was because of Bhagavad Gita. Wow. So I highly recommend this to everybody, and especially December is the month. I suppose you will obviously tell more about this to everybody. This is the month when we distribute Bhagavad Gita. And if all of them could also, keep it or give one, we can also do with this group, Mataji, something like this. Certainly. We recently had Mokshada Ekadashi, on which there's a day on which Krishna spoke the Bhagavad Gita to Arjun. So it is very auspicious to give a Bhagavad Gita or to bring home a Bhagavad Gita or to chant, recite Bhagavad Gita every day in this month. तो हमें at least कोशिश करनी चाहिए कि हम हमारे जितने भी relatives और friends हैं हम उन तक भगवद गीता पहुंचाएं. And like Kirti said, Prabhupada said that my books are like time bombs. They will blast, they will explode sometime in future. जरूरी नहीं है कि अभी हो सकता है हम सोचते हैं अरे ये तो पढ़ते नहीं, इनको क्या देनी चाहिए, है ना. We know devotees who were keeping Bhagavad Gita for 3-4 years, and when they were going through a depressed time, then they started reading and their lives changed from there. So देनी चाहिए, सबको देनी चाहिए Bhagavad Gita. So if you have any friends, you can tell us and we can dispatch the Bhagavad Gitas to you. Okay. These are the Bhagavad Gitas. Jai. Smita Mataji. Hari bol. Jai. Shalini, would you like to say something? यस माता जी, जैसा सबने बोला है मेरा एक्सपीरियंस भी वही है. जब चैंटिंग करते हैं तो बहुत अच्छा लगता है. कई बार तो इतना अच्छा लगता है कि लगता है लाइफ रिवर्स हो जाए. हम चैंटिंग के लिए कम टाइम देते हैं और बाकी चीजों के लिए ज्यादा टाइम देते हैं. तो ऐसा क्यों नहीं होता है कि कृष्णा के लिए हम ज्यादा टाइम निकालें और बाकी काम कम टाइम में करने पड़े. ऐसा हो नहीं पाता है. सुंदर बात बोली आपने. जय. पता है माता जी, दूसरा काम हमने क्या किया है, अगर हम चैंटिंग नहीं भी कर रहे होते हैं ना तो हम एलेक्सा को लगा देते हैं काम पे. 24/7 मेरे घर में एलेक्सा चैंट करती है. हम सो जाते हैं लेकिन चैंटिंग चलती ही रहती है. तो हम जब सुबह उठते हैं तभी मैं और मेरा बेटा, हम दोनों, हम सुबह उठते हैं तो हम उसी मूड में उठते हैं और रात को हमें एलेक्सा डिस्टर्ब भी नहीं करती. मतलब वो लोएस्ट वॉल्यूम पे उसको लगा के हम लोग सो जाते हैं और बहुत अच्छी नींद आती है. So beautiful. This has really helped. मतलब जितना हम दूर होते हैं ना इससे ऐसा लगता है नहीं और टाइम मिलना चाहिए. कृष्णा को सोचना भर भी इतना अच्छा लगता है ना, सिर्फ सोचने से इतना खुशी मिलती है that he is there and he is looking after us. He is looking Yes. after us. How beautiful. Thank you for sharing. So heart touching. Thank you for sharing. माता जी, मेरा एक और क्वेश्चन है, इससे रिलेटेड नहीं है बट आई वांट टू आस्क. सो अगर सब लोग कर लेते हैं उसके बाद मैं आई वुड लाइक टू आस्क. बस मैं ये निकिता और ऋचा से आशा जी से पूछ लेती हूँ. निकिता, आप कुछ बोलना चाहेंगे? मैं तो माता जी 24-25 राउंड्स भी करती थी पहले, पर आई डोंट नो सडनली मेरा छूट गया है एंड अभी वो मेरा नहीं हो पा रहा है. कितना कर रहे हो आप? मैं नो नथिंग. मैं बस ऐसे तो भगवान हर वक्त मन में रहता है कि कृष्णा का नाम ही रहता है, बट वो माला नहीं कर पा रही माता जी. और डिसिप्लिन
डिसिप्लिन चाहिए, वापस आ जाओ, है ना, थोड़ा थोड़ा अभी मेरे लाइफ में इतने चेंजेस होते रहते हैं, यहाँ से वहां भागते रहते हैं, पता नहीं क्यों माया ऐसी नचाती रहती है। 2 बट माला से शुरू कर लो प्लीज, है ना, चैंटिंग वो मैं माता जी आपको बोलूं, मैं भगवत गीता भी पढ़ती हूँ, भागवतम भी पढ़ती हूँ, सारे मेरे पास जो भी आप मतलब आपके गाइडेंस में और अदर गाइडेंस ऑफ अदर पीपल टू, तो मैंने तो बहुत सारी बुक्स हैं वो पढ़ लेती हूँ। और पता नहीं क्यों आलस इतना आ गया कि मैंने इतना अच्छा एक्सपीरियंस था, मैं आपको बता नहीं सकती। मेरा 18 मतलब 16 तो मेरी हर डे की चैंटिंग थी, एंड देन एकादशी एंड सम स्पेशल ओकेजन 24 25 मैं जितना भी कर लेती थी राउंड। आई डोंट नो क्या हो गया, मेरे से अभी हो ही नहीं पा रहा है। तो वो पता नहीं एक आलस हो गया है या पता नहीं क्यों, आई डोंट नो क्या हो गया है, नहीं हो पा रहा है। नहीं नहीं, आप भक्तों के संग अगर नहीं होते हैं ना, तो ये सेल्फ सस्टेन नहीं कर पाते, क्योंकि माया बहुत स्ट्रांग है। तो अनीता जी आप प्लीज अभी से, है ना, जो भी आप कर सकते हैं, 2 4 5 माला आप हर रोज का नियम बना लीजिए। यू जस्ट हैव टू कम बैक, है ना, कुछ और करना नहीं है, जो टाइम चला गया चला गया, बट अब आप वापस आ जाइए। वो माता जी थोड़ा सा हेल्थ इशू हो गया था, पता नहीं क्यों माइंड ऐसे डिस्टर्ब हो गया था। आई नो सब मतलब आई डोंट नो, बट थोड़ा है मन में रियलाइजेशन की है तो सब भगवान की लीला ही सब कर रहे हैं, बट पता नहीं क्यों मन में एक अंदर से नहीं आ रहा था। तो यस आई एम ट्राइंग हार्ड, बट मैं करती हूँ आप किसी मेरे दिन। को प्रॉमिस करो, आज से आप 2 माला करोगे कम से कम, है ना, ज्यादा जी नहीं है जी 2 माला माता तो, है जी, ना, 15 मिनट केवल, ठीक है। जी 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 जी, प्लीज आई विल ट्राई प्रॉमिस माय बेस्ट। या हाँ नॉट जी हाँ lying, you have to जी। promise 2 ओके rounds माता every जी। day, 15 minutes for Krishna, है ना। आई हैव 24 आवर्स फॉर कृष्णा, पर पता नहीं क्यों कृष्णा तो हर वक्त मन में रहते हैं, पर वो चैंटिंग नहीं चल पाती हर वक्त ऐसे। देखो मन में कृष्णा, हर वक्त रहता है हरे कृष्णा या कुछ भी कृष्णा ही रहते हैं मन में, बट वो चैंटिंग नहीं हो पा रही, आई डोंट नो व्हाई। माता जी देखो, सब तरफ पानी है ना, हवा में भी हाँ जी मॉइस्चर है ना, बादल में जी भी जी पानी है, कुएं में भी जी पानी है, अर्थ के अंदर भी पानी है, पर आप ये सब पानी पी सकते हो? नहीं पी सकते ना, आपको पानी जी ग्लास में डाल के ही पीना पड़ेगा, है ना, या बोतल में डाल के ही पीना पड़ेगा। हाँ जी हाँ इसी जी प्रकार से भगवान सब जगह हैं, आप उन्हें स्मरण कर रहे हो, अच्छी बात है, लेकिन जो हाँ प्रोसेस जी बताया है कृष्णा ने स्वयं आके, ये प्रोसेस बताया कि हरि नाम का हाँ जप जी करो, है ना। जी 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 This Hare Krishna Mahamantra is not just Krishna, it is also Radharani. It is also जी whole spiritual world. गोलोकेर प्रेम धन हरि नाम संकीर्तन। तो ये प्रेम का धन है, तो आप उसे पुकारोगे नहीं तो कैसे मिलेगा, है ना। हाँ जी हाँ जी तो ये 2 राउंड्स आप हर रोज चैंट करो, मेरी आपसे हाँ जी। हम्बल रिक्वेस्ट है हाँ माता जी। नहीं नहीं, मैं आई विल डू माता जी। मैं इसीलिए आपसे बात भी करने की सोची थी, लास्ट वीक में मैंने कहा था बात करूंगी Yes, आपसे। yes. तो यही एक बात थी, सबको डिस्टर्ब नहीं करना चाहती थी। Only- तो आई विल स्टार्ट माता जी, हाँ 100%। प्लीज प्लीज वो जी मत छोड़िए, है ना। जी जी जी, हरे ओके, कृष्णा माता जी। माता जी अगर आपसे अकेले में नहीं हो पा रहा है, एवरी इवनिंग 9:30 to 10 हमारा जपा रूम होता है, आप वहां आइए, भक्तों के साथ शायद हो पाए। जी जी, वो मैंने ग्रुप में देखा है। स्मिता माता जी एवरी डे मायापुर से लाइव आरती शेयर करती हैं, so when you have the darshans, when you hear everybody doing it, maybe that will help. Yeah, I'll try to join that also. But from today, I'll start my own japa as well. yes. Thank you, Hare Krishna. Thank you. Okay, Richa, we want to hear from you. Yeah, no, just what everyone has said. मतलब कि जो bliss इससे आता है, I would say कि कभी कोई normal तो है ही, but अगर sometimes when you're very disturbed or anything of that sort, nothing can fix you or give you that inner peace जितना chanting से आता है, and it works instantly. कोई चीज इतनी इंस्टेंटली वर्क नहीं करती जितनी ये करती है, स्पेशली फॉर मी। मेरे को पर्सनली लगता है कि मैं बहुत जल्दी चीजों से डिस्टर्ब हो जाती हूँ, या मुझे बहुत जल्दी कई चीजें अफेक्ट करने लग जाती हैं। एंड अर्लियर आई यूज्ड टू कीप इट इन मी, मैं रख मतलब कि वो चीज मेरे को डे 2 days मेरे साथ चलता था, बट नाउ व्हेन आई चैंट एंड नाउ इट्स अ रूटीन कि जब भी मुझे कुछ ऐसा होता है जो दिन में एक दो बार कभी हो ही जाता है, आई चैंट and it just like I just leave it all, and it I just feel that bliss I have not felt, and which like is pure bliss. And also I feel कि environment से इतना फर्क पड़ता है। जब normal chanting करते हैं वो तो है ही है, but
कभी मंदिर में जाके या when we go to ISKCON, especially when I went to Vrindavan. I'm sorry for the disturbance. When we went to Vrindavan also for the whole Diksha ceremony, वहाँ पे जाके जो peace जो feel होता है, that is beautiful. Yeah. So I want to experience that again and again. Yes. Very nice. Very beautiful. Jai. Thank you so much. Very nice. So we have. I would also agree with Richa. मुझे भी लगता है पेंटिंग के बाद से मैं भी बहुत स्टेबल हो गई हूँ, बहुत सारी चीजें बहुत बॉदर नहीं करती हैं, लगता है ठीक है कोई है ऊपर देख रहा है, संभाल लेगा मेरे बिहाफ पे। सो एक स्टेबिलिटी बेटर हो गई है। Yes. It just gives you so much stability. You're right. Yes. The more we chant and the more we'll get into it, you know, more calm will become. So actually 12:30 हो गए हैं. I think last week के भी कुछ sections बाकी रह गए थे ना. We have actually 3 parts: passage for discussion, we have Namamrit, which is nectar of the holy name, and we have preaching is the essence. कीर्ति, हमने last week complete कर लिया था सारा क्या? Are you there, कीर्ति? Mataji, we've done till questions. Last week भी हमने questions ही किए थे ना? Yeah. तो क्या करें, ऐसे रह जाता है ना हमारा, वो 2 parts रह जाते हैं हर In the बार. next, we just do the Namamrit and preface. दोनों class, दोनों chapters का. ठीक है, दोनों कवर कर लेंगे. I think we can just maybe. Okay, ठीक है, डिस्कस नहीं कर पाएंगे, थोड़ा तो elaborate करना पड़ेगा. So, but I just want to just speak about the holy name just a little bit. So, सारे scriptures, especially 2 of them, Kali Santaran Upanishad और ब्रह्म नारदीय पुराण. तो ब्रह्मा जी जानते हैं, आप जानते हैं कि ब्रह्मा जी ने सृष्टि की है ना, और उनके डिसाइपल है नारद मुनि. नारद मुनि जो हैं वो एक शुद्ध भक्त हैं और उनको बहुत चिंता है लिविंग एंटिटीज की. आप सब लोग जानते होंगे ये जो वाल्मीकि हैं, वाल्मीकि एक डाकू हुआ करते थे जो मर्डरर भी होते थे, है ना. कैसे उन्होंने क्योंकि वो उनके पास इतनी शुद्धता ही नहीं थी कि वो राम राम चैंट कर सकें, तो नारद मुनि ने ट्रिक से उनको मरा 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 चैंट करा के राम 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 चैंट करवा दिया. तो उसी प्रकार से ध्रुव महाराज, प्रहलाद महाराज जो जिनका जन्म राक्षसों के परिवार में हुआ, उन सबको उन्होंने डिवोटी बनाया. एंड ही इज ट्रैवलिंग, ही इज अ ट्रांसेंडेंटल स्पेसमैन, ही इज ट्रैवलिंग एंड वो अभी भी भक्त बना रहे हैं. तो एक बार नारद मुनि बहुत चिंतित थे और बोले कि वो अपने पिता ब्रह्मा जी के पास गए और ब्रह्मा जी से बोले कि कलयुग में तो बहुत ही खराब हाल होने वाला है ना. सब लोग इतने डिस्टर्ब्ड होंगे, इतने मेंटली स्ट्रेस्ड होंगे, आयु छोटी हो जाएगी, तो कैसे सब लोग जप करेंगे भगवान के नामों का. कैसे ये लोग भगवान को प्राप्त करेंगे, भगवान की जो हमारी और भगवान की रिलेशनशिप है, वो कैसे हाउ विल दे एबल टू फाइंड इट आउट. सो ब्रह्मा जी, what Brahmaji told Narad Muni, he said, I'll tell you in Sanskrit first. He said, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, iti shodashka nam kali kalmashanashanam nattah paratropaya sarva vedeshu drishyate. तो क्या है ये जो हरे कृष्णा महामंत्र बोला, आप देखते हैं ना इसमें 16 वर्ड्स है ना. तो उन्होंने बोला षोडश का मतलब 6 + 10 है ना, 16. ये जो 16 अक्षर का महामंत्र है, यही कली कलमश नाशनम, कलयुग के जो कलमश हैं, है ना, जैसे हम टेंशन में रहते हैं, इतनी एंजाइटी है, आयु का कुछ पता नहीं, छोटे छोटे बच्चों को भी डेथ हो जाती है, पहले युगों में नहीं होती थी. तो कली के कलमशों को कौन नाश करेगा? ये जो 16 अक्षर का महामंत्र है. नात्तः परत्रोपाया, मतलब इसके ऊपर और कोई उपाय नहीं है. सर्व वेदेषु दृश्यते, है ना. कितने वेद हैं? 4 वेद है ना. सर्व वेदेषु दृश्यते, कितना भी हम बाकी सारे जितने भी वेद हैं उनको स्टडी कर लें, कंक्लूजन यही निकलेगा, है ना.
तो कुछ लोग जैसे समझते हैं हरे कृष्णा महामंत्र इस्कॉन वालों ने अपने आप कर दिया, तो इसीलिए हम आपको संस्कृत में भी बता रहे हैं, है ना, हाउ इज दिस महामंत्र चेंजिंग द लाइफ ऑफ पीपल वर्ल्ड ओवर. We are Indians, we still know about Krishna and Ram, but what about those people living in Africa, in America, in Europe, in many tribals in Australia, in Africa, सब लोग चैंट कर रहे हैं, उनका जीवन चेंज हो रहा है ना, प्योर हो रहा है जीवन, हैप्पी हो रहा है, काम हो रहे हैं, शांति आ रही है जीवन में, पीस आ रहा है. तो ये कैसे हो रहा है? बिकॉज दिस महामंत्र is applicable to everyone, है ना, and you don't need to change your religion. कोई क्रिश्चियन है, क्रिश्चियनिटी प्रैक्टिस कर सकता है, साथ में ये मंत्र भी चैन कर सकता है, क्योंकि उसे कली के कलमशों को नाश करना है. सबसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि हर रोज चैंटिंग करें और चैंटिंग बढ़ाने की कोशिश करें, जिससे कि हम इस हैप्पीनेस को, इस पीस को अचीव कर सकें. ठीक है, ओके, विद दैट थैंक यू, आई थैंक यू ऑल फॉर योर काइंड अटेंशन. हरे कृष्णा. किसी का कोई डाउट है, कोई बात करना चाहता है?